Hello friends, so welcome to online session of Gopal Tech. So today's online session is for class 10th, subject biology, how do organisms reproduce. So we learn this chapter into a 4 sessions, and out of that, so we are discussing today the first one. So I am GR Chopre, PGT Biology. So reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. हमें मालूम है. Unlike what you have studied in the first chapter, life process, such as nutrition, respiration or excretion. ये इसके लिए नहीं चाहिए. It is not to maintain the life, but it is to continue the life. So to create more individuals by organism, a lot of its energy will be spent for the reproduction process. So why should an individual organism waste energy which is not meant for him on a process it does not need to stay alive? जिंदा रहने मुझे जिंदा रहने के लिए I does not need the reproduction, इसलिए why I should waste the energy? So reproduction is the process by which a living organism produce a new organism, an individual which are similar to themselves. Mango plant give mango, cat will give birth to kitten, like that. So reproduction ensures the continuity of life on the earth from generation to generation. So reproduction is a bridge to hereditary transmission, अनुवंशिकता. So hereditary factors, inheritance होते रहता है. Then how it will create the exact copies? The DNA in our body we have studied in the 9th standard. nucleus है, nucleus के अंदर chromosome contain DNA और DNA के अंदर छोटे छोटे factors होते हैं, units होते हैं, they are called as genes. So DNA is the source of making proteins in our body. और हमें ये भी मालूम है proteins are the building blocks. So different proteins will eventually lead to a altered body design. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रोटीन्स तैयार होते हैं, इसीलिए उसका बॉडी डिजाइन जो दिखता है वो चेंज होता है. इवन ह्यूमन बींग्स में देखो स्किन कलर, दो ब्रदर या सिस्टर का कलर भी चेंज होता है बिकॉज ऑफ दैट प्रोटीन या पिगमेंट जो भी है. It involves a continuation of characters from the parent to daughter cells by number 1 copying of DNA deoxyribose nucleic acid, वैसे RNA भी होता है. That molecules present in the chromosome of the cell, अगर एक DNA उसका कॉपी बनता है, डबल बनता है. ओके 23 है तो 46 बनते हैं, ऐसा डबलिंग होता है. So this is a cell of animal. See there are number of chromosomes. एक chromosome ले लो, that chromosome contain a long thread-like structure, chromatin. उसके अंदर एक chemically called as DNA. At the part of the DNA where the one trait या character is present, that is called as gene. So copying of DNA is also not a foolproof exercise. यानी वो गारंटी नहीं कि ऐसा ही होगा. Even there is a minute changes, थोड़ा भी changes होता है DNA copying के समय, that bring variation in the blueprint of the offspring. Blueprint यानी जो भी घर बनाने से पहले कैसे हम प्लान करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म बनने से पहले वो ब्लूप्रिंट तैयार होता है. DNA is our blueprint. The useful variation जो हमारे लिए अच्छे है are retained while the harmful one does not go beyond. जो शरीर के लिए धोखादायक हो जाते हैं, अगर गए वो डिसीज के रूप में भी रहते हैं. So actually variation are very very helpful to the species to withstand, resist the drastic environmental changes. Surrounding जो भी changes होते हैं उसको लड़ने के लिए variation बहुत important है. Thus the variation saves the species from becoming extinct and promote its survival for the longer period. यह है variation का मतलब. Now what are the basic steps इधर?
इन एवरी रिप्रोडक्शन फर्स्ट वेदर सिंगल सेल का रिप्रोडक्शन हो या मल्टी सेलुलर का हो, क्रिएशन ऑफ 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल। जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें पहला डीएनए के कॉपीज बनना है, डबल होना है। देन जो डबल हुआ है डीएनए, सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम ईच अदर, अगेन नॉर्मल बनेगा along with the cellular apparatus, जो आपने सेल में पढ़ा है, ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्मा है, वो भी इक्वली सेपरेट होगा। देन ये सेल डिवाइड्स, बीच में से सेल डिवाइड होता है and give rise to 2 सेल या 4 सेल या 8 सेल, ऐसे चलते रहता है। सो द डीएनए कॉपीज जो जनरेट होते हैं विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल, बिल्कुल नहीं हो, थोड़ा ना थोड़ा वहां पे चेंज होता है कंपेयर टू ओरिजिनल वन, और वही चेंज इज कॉल्ड एज वेरिएशन। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, डिफरेंसेस? सो वी नो दैट a niche, that is a population of organism fit या fill in a well defined place, हैबिटेट में एक जगह पर एनिमल सुरक्षित रहते हैं, ऐसे एरिया को वी कॉल एज निश। फॉर एग्जांपल नेस्ट which is built on the tree by a bird, तो ट्री इज द हैबिटेट ऑफ बर्ड, लेकिन उस नेस्ट में, नेस्ट ऐसे जगह पर बनाता है दैट इज वेल डिफाइंड होता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड निश। सो दैट कैन चेंज, वो जो है हैबिटेट वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन ए टेम्परेट वाटर, यानी वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, वहां पे बैक्टीरिया है। सो इफ द वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ड्यू टू सर्टन ग्लोबल वार्मिंग, या फैक्ट्री से वार्म वाटर छोड़ दिया, सो व्हाट विल हैपन, many of the bacteria, most of the bacteria will die because they cannot resist the change in the temperature. But the few जो वेरिएशन आ गया या वेरिएंट्स जो बदलाव आ गया डीएनए के अंदर, रजिस्ट टू हीट, वो रजिस्ट करेंगे उस गर्मी को, एंड दे में सर्वाइव। अगर वो सर्वाइव हो गए, दे ग्रो फर्दर, और वो अभी बैक्टीरिया की एक नई पीढ़ी बनेगी। सो देयरफॉर वेरिएशन is thus useful for the survival of species over the time. ओके तो हमारे में भी वेरिएशंस होती है, एवरी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस होता है, इसलिए पहले पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी थोड़ा फर्क रहती है ना। सो दिस वेरिएशन इन डीएनए कॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इट इज ए पार्ट ऑफ ए रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? देयर आर 2 टाइप्स, asexual और दूसरा है that is sexual mode of reproduction. Now पहला try to understand the difference. New organism produced from a single parent in asexual reproduction, or either new organisms are produced from 2 species and 2 parents, male or female. Here sex organs are involved, they are not involved. Asexual में either sex organs are involved या required. Only mitosis division takes place. 9th में हमने पढ़ा है माइटोसिस और मियोसिस, इधर मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इधर गैमेट्स नहीं तैयार होते हैं तो फ्यूजन भी नहीं होगा, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। जब फ्यूजन नहीं होगा, जाइगोट नहीं तैयार होगा, सो ऑल नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली सिमिलर, वो क्लोन्स बोलेंगे, हुबेहूब रहते हैं, बट हियर दे आर नॉट जेनेटिकली सिमिलर, थोड़ा ना थोड़ा चेंज होता है। हियर वेरिएशन नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, बट हियर द वेरिएशन इज मस्ट। कहां पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयरफॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो वेरिएशन को चांस देता है, और वेरिएशन लीड्स टू सर्वाइवल बेटर। इट इज ए क्विक मेथड है, इट इज ए फास्ट स्लो मेथड है। ये सिंपल है असेक्सुअल, सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स है। Okay, now so first we discuss modes of reproduction used by single cell organism, a single organism. The methods by which organism reproduce depend upon the body shape and the structure of the organism. For unicellular organism, the cell division itself creation of new individual. तो जब एक सेल है, वो एक सेल जब डिवाइड होता है, वही पेरेंट 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, तो इधर पेरेंट मरता ही नहीं है।
एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, ये सभी क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे मोस्टली अलो या फॉलो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनमें हमेशा यही होता है। टाइप्स बहुत सारे हैं, फिशन यूनिसेलुलर, बडिंग यूनिसेलुलर में, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दिस इज जनरली कॉमन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बडिंग मल्टी सेलुलर में भी होता है, एक एक करके देखेंगे। फिशन, सी द डायग्राम ऑफ अमीबा। बाइनरी फिशन यानी द ऑर्गेनिज्म दैट इज पेरेंटल ऑर्गेनिज्म सिंपली स्प्लिट या डिवाइड into two equal halves during the cell division। यहाँ पे देखो अंदर, in amoeba the splitting of the two cells during division क्या takes place in any plane। ये ऐसा भी डिवाइड हो सकता है, ऐसा भी डिवाइड हो सकता है। देखो पहला न्यूक्लियस एलोंगेट हो रहा है, फिर वो न्यूक्लियस सेपरेशन हो रहा है, दो न्यूक्लियस बन गए, दैट इज डीएनए कॉपिंग, देन सेलुलर अपरेटस अलग हो गए, देन यहाँ पे सेल डिवीजन, तो दो डॉटर सेल्स, सो इट इज इरेगुलर टाइप। कहां से भी डिवाइड होता है तो इरेगुलर टाइप। ये डायग्राम आप निकालेंगे, मेक द वीडियो पॉज एंड ड्रॉ दिस डायग्राम। पेरेंट अमीबा, elongation of nucleus, division of nucleus and cytoplasma result in two daughter cells। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा। Now in leishmania which cause a kala azar disease, it has a whip like structure, that is flagella at one end of the cell। It divide or split by only one plane, क्योंकि अगर कैसे भी डिवाइड होगा तो एक में फ्लैजेला आएगा, एक में नहीं आएगा। सो आकर्स इन ए डेफिनेट ओरिएंटेशन, एक जगह से, और उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। पैरामीशियम में वही ट्रांसवर्स होता है। नाउ सी द डायग्राम, ये है लॉन्गिट्यूडनल। अब ये देखो विप लाइक स्ट्रक्चर, लेसिमेनिया, तो ये ऐसा डिवाइड होगा, ओनली इट विल डिवाइड लाइक दिस, ऊपर ऐसा, एंड प्रोड्यूस ए टू सेल्स। अभी इधर देखो ये ट्रांसवर्स, इन पैरामीशियम इट विल डिवाइड लाइक दिस, ये ऐसा ही डिवाइड होगा, या इवन प्लानेरिया में भी होता है। So, this is about binary fission. Now next one is multiple fission. The parent organism divide या split to many times into new organism at the same time, वो भी when the conditions are not good या adverse। So inside the cyst, ये देखो ऐसा hard layer तैयार होता है, wall तैयार होता है, that is called cyst। The nucleus of the cell divide several times and form many smaller nuclei called daughter nuclei, many plural। Then little bit of cytoplasma, देखो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में थोड़ा सा cytoplasma collect around each daughter nuclei and the thin membranes are formed around them। और जब conditions favorable बनते हैं, that will release into new organism that you can see best in malarial parasite plasmodium। जो मलेरिया लाता है हमें, वो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है। ओके, ऐसा सी दिया, आप देख सकते हैं इधर, या ऐसा सिंगल सेल, सी दैट मेनी डॉटर, देन हियर इट विल ब्रस्ट एंड प्रोड्यूस ए न्यू डॉटर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ अमीबा आल्सो डिवाइड इन एडवर्स कंडीशन बाय मल्टीपल फिशन। ये सिस्ट या प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल। Many new daughter cells are formed from a single parent cell within a cyst। यहाँ पे देख सकते हैं, सी पेरेंट अमीबा अपने सीडोपोडिया लूज करेगा, थिक वॉल बनेगा, दैट इज अ सिस्ट। देन उसके अंदर न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होगा, छोटा सा साइटोप्लाज्मा आएगा, फिर ये सेल वॉल ब्रेक होने के बाद इट विल रिलीज ए अमीबे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, बडिंग। बडिंग में a small bulb like projection, छोटा सा, coming out from the east, east से वो बाहर निकलता है। ओके, छोटा सा वहां पे coming out of the, that is called as a bud। So the parental nucleus यहाँ पे अंदर elongates and then it will divide into two, one of which moves into the bud। दो न्यूक्लियस बनेंगे, उसमें से छोटा न्यूक्लियस अंदर चला जाएगा। The bud then gradually, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, grows and get detached, parent cell से अलग होता है, and the new yeast cell grows
मैच्योर एंड प्रोड्यूस मेनी ईस्ट सेल्स। ये भी आपको प्रैक्टिकल आएगा। ऐसा आप देख सकते हैं स्लाइड जब आप प्रिपेयर करेंगे, यू कैन सी दिस इज द स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखो इसमें न्यूक्लियस एक आ गया, इधर एक है, देन इट विल डिवाइड एंड बिकम द 2 ईस्ट सेल्स। ओके, ये ऐसा माइक्रोस्कोप या यू कैन सी द लाइव वीडियो जो हमने लैब में बनाया था, ये ऐसा आपको नजर आएंगे। कैन डू दैट इन प्रैक्टिकल आल्सो। रिजेक्टिविटी, टेक शुगर, एड ईस्ट जो बेकरी में मिलता है, यहाँ पे देख सकते सीधा मेनी स्मॉल बड, ये देखो बड, देखो यहाँ पे these are the yeast cells you are observing under the microscope। बाकी के भी एनिमल्स हैं, देखो यहाँ पे बड, सी सो मेनी, ये देखो इधर। ओके, या यू कैन सी हियर, सी इधर दिख रहा है, ये कैसे डिवाइड होते जा रहे हैं। सी यार, ये देखो बड, हियर इट इज ए बड, अभी न्यूक्लियस उसके अंदर ग्रो होगा। ओके, दिस इज now, yeah, you can draw this diagram। parent is cell, bud forming, bud nip भी हो सकता है, निकल के सिंगल भी बनेगा, या वो चेन के रूप में भी ऐसा रह सकता है। So then how reproduction takes place in multicellular organism? So in multicellular, it is not a single cell, many cells होते हैं। So the specialized cells are organized as a tissues, and the tissues may be organized into specific organ, जैसे जैसे organism complexity बढ़ता है, and these placed at a definite position within the body, वो एक particular जगह पर होते हैं। In such organized situation, cell by cell division would be impractical। ऐसा नहीं होता एक cell divide दो, ऐसा नहीं होता है। So therefore, they need to use more complex way of reproduction। थोड़ा simple से complex way होता है। The basic strategy है सभी में, different cell types perform different specialized functions, that is division of labor। Then specific cell achieve capable of growing, उसमें से एक specific cell होता है, उसको हम reproductive cell या germ cell बोलेंगे। It will proliferate, multiply and making the other cell types under the right situation या right circumstances। तो how it will take place in budding, because Hydra is a multicellular organism। इसके पहले हमने yeast देखा unicellular। Now how it is differ? See, in Hydra, यहाँ पे a group of cells divide and redivide and bulging आता है, and that bulging is called bud। Then इधर के जो special cells होते हैं, they undergo differentiation, proliferate, differentiation and produce a tentacles या similar hydra। फिर ये hydra अपने माँ से अलग होता है, parent से अलग होता है and become new hydra। So a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site, ये किसी जगह पर। Then it use regenerative cell, वही cell regenerate होते हैं, and these buds develop into a tiny individuals, and when fully mature, they detach from the parent body and become a new independent individuals। यहाँ पर भी देख सकते हैं parent hydra, then developing bud, then new bud and new hydra। तो you can draw this diagram और label कर सकते हैं, very important। Okay, now if you see this video तो आपके ideas clear। bud देखो ऐसा grow हो रहा है, the bud या other side से आप देख सकते हैं, ये enjoy कर सकते हैं। ये टेंटाकल्स वगैरह डिफरेंशिएशन होंगे यहाँ पे, सी इधर टेंटाकल्स, ये डिफरेंशिएशन एक दो ऐसे कितने भी तैयार हो सकते हैं। ये टाइम आएगा, ये अलग अपने अलग होते वो बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना। अभी फ्रेगमेंटेशन, इट इज ए एक्सीडेंटल है, नेचुरली जनरली नहीं होता है, एंड यू कैन सी इन स्पाइरोजाइरा। The alga breaks up into 2 or more fragments or pieces upon maturation। These fragments or pieces grow into a new individual। अभी इधर स्पाइरोजाइरा है,
अभी देखो इसके टुकड़े बन गए, सोचो 1 और 2. So this will grow as a new, a लंबा लंबा ऐसा filaments बनेगा. So this is what you call fragmentation. Each fragment will develop into a new spirogyra. Simple. Then regeneration. It is very common in Hydria planaria. Again ये भी accidental है. So they can be cut into many number of species. Any number of species. जितने pieces बनेंगे उतना एक एक piece grow into a new organism. Each piece grow into a complete organism. It is carried out by again specialized cells. These cells multiply, that is proliferate, make a large number of cells, and from this mass of cells, the different cells undergo changes. वो अंदर changes होते हैं and become various cell types and tissues. तो ये रीजनरेशन का मेथड है. यहाँ पे देख सकते हैं रीजनरेशन. एक कट, सेकेंड कट, 1 2 3. तो ये जो अपर पार्ट है ये लोअर पार्ट रीजनरेशन करेगा. मिडल पार्ट है अपर एंड लोअर पार्ट रीजनरेशन करेगा. लोअर पार्ट है ये अपर पार्ट रीजनरेशन होगा. ये हाइड्रा में भी देखो. सो दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस. पहला स्पेशलाइज्ड सेल्स वो डिवाइड होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, अलग अलग टिश्यू या ऑर्गन तैयार होंगे, देन पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है. So regeneration in planaria, if organism is somehow cut, somehow or broken into many pieces, each piece grow into a complete organism. However, regeneration is not same as reproduction, क्योंकि ये कट होने के बाद होगा. नए बच्चे या नया ऑर्गेनिज्म तैयार करना है बोल के नहीं होता है. रीजनरेशन हमारे शरीर में भी होता है. अगर स्किन कट हो गया नया स्किन आता है, लेकिन नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है. वाल लिजार्ड, उसकी टेल कट हो गई तो नया टेल आ जाता है. ओके, सो मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट, कि मुझे कट करो मुझे नया ऑर्गेनिज्म पर. ऐसा कोई नहीं सोचता है. ओके, अप टू एबल टू रिप्रोड्यूस. इसीलिए वी कैन नॉट कॉल रीजनरेशन इज ए रिप्रोडक्शन. बट सम ऑर्गेनिज्म में नया ऑर्गेनिज्म कट होने के बाद होता है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. Okay, now if you see here ये अलग अलग एनिमल्स देखो. सो दिस इज अमीबा, बाइनरी फिशन. ये रियल है अंडर द माइक्रोस्कोप. देखो ये डिवाइड हो रहे और यहाँ से देखो कट हो गया. सो 2 इट इज इररेगुलर. अभी ये भी है. ओके, आप देख सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म दैट इज पैरामीसिस. ये रियल है. divided into 2 organs. It is binary fission. ये transverse है. ये देखो यूग्लिना, ये longitude, ये ऐसे डिवाइड होता है. सीधा क्लोरोप्लास्ट इसका और इधर ये फ्लैजेला. जैसे आपने ट्रैपेनल रोमानो एक्सपेरिमेंट आपको करना है. ऐड वाटर करो. ओके, 1 ड्रॉप ऑन द स्लाइड आफ्टर हाफ एन आवर. ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. इसके पहले मैंने आपको वीडियो सो मेनी टाइम हाइड्रा ईस्ट चेन दिस इज बडी. हाइड्रा के टेंटाकल्स. ये दूसरे एनिमल्स को क्या, ये देखो नंबर ऑफ हाइड्रा कैच किया खाता है अलग अलग एनिमल्स. ये देखो अभी बट रियल इधर डिवीजन हो रहा है. उसके अंदर देख सकते हैं हाउ द सेल्स आर डिवाइडिंग एंड दैट इज बंचिंग. बड़ा हो रहा है.
रीजनरेशन। देखो इसको कट किया, दो पीस को, फर्स्ट पीस और इधर सेकेंड पीस, ये देखो फर्स्ट और सेकेंड। इधर देखो, इधर टेल है, इधर हेड है। अब ये दोनों देखो, इसका टेल आएगा, ये का हेड आएगा। जस्ट टू ऑब्जर्व ये ऑफ एम्पुटेशन, एम्पुटेशन यानी कटिंग। 2 दिन के बाद देखो इसका पार्ट, सो रीजनरेट हो रहा है। और एक प्लानेरिया था, 2 बनेंगे। इधर डिफरेंशिएशन हो रहा है, आई वगैरह। दिस इज वन प्लानेरिया, another planeria, a real planeria. इसका टेल पार्ट रीजनरेट हो रहा है, तो होएगा नहीं। सो न्यू, entirely new, this one and this one, that is regeneration. Okay, so this is how it will take place. Now this is another one, that is spore formation. आप देख सकते हैं इधर, ये है rhizoids, horizontal hypa, then some hypae will grow erect vertically, और उसका टिप बल्ब बनेगा, that is called sporangia या sporangium. Inside the sporangium nucleus divide होगा and become spores, and this will break and the spores are released into the air. उसी को हम बोलेंगे spore formation. Parent plant produce hundreds of tiny spores which can then produce a new plants. During the growth of fungus, best example rhizopus, tiny round या bulb-like structure called sporangia develop at the top of the each hypae, erect hypae. Then the nucleus divides several times within the sporangium, and each part of the nucleus along with the bit of cytoplasma develop into spores. वो बाद में spores बनेगा. When the sporangium of that plant burst, break हो जाएगा, then the spores are spread into the air. When these spores land on food or a soil under favorable conditions, यानी normal temperature और moist या warm जगह है, तो then germinate and produce the new fungus in the form of hypae. आपने देखा होगा जो बुर्सी बोलते हैं आप लोग, कॉटनी मास ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर आता है. बेस्ट एग्जांपल राइजोपस या म्यूकर, या उसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, या पेनिसिलियम. इधर देखो, ये देखो, ये हाइपा, ये अभी स्पोरेंजिया, इधर एक है, इधर एक है. नाउ सी दैट इनसाइड ये भी रियल है, उसके अंदर देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. सो स्पोर्स आर प्रोड्यूसिंग नाउ, and this is called spore formation. ये माइक्रोस्कोप के अंदर आपको नजर आएगा, लेकिन we have to record it in a very real time. So this is how. इधर भी देखो 1 2 3 4 sporangia नजर आ रहे हैं, इधर भी है, but you can observe this 4 sporangia. अभी देखो इसका स्ट्रक्चर ये लार्जर हो गया कंपेयर टू दिस वन या दिस वन. तो अब ये ब्रेक होगा and release the spores. Can I beautiful? Okay, this is how it will. Now we'll summarize what we have learned. Reproduction, unlike other life process, is not essential for the maintaining the life of an individual organism. Reproduction involves the creation of DNA copy and additional cellular apparatus by the cell which are involved in the process. So the various organisms use different modes of reproduction depending on their body design. In fission, the many bacteria, okay, produce या protozoa simply divide into 2 or more daughter cells. ये भी आपने देखा है. Yeast and hydra give out buds, one is unicellular, one is multicellular, which mature into new individual. Then the organisms like planaria या hydra can regenerate if they are broken into pieces. Organisms like rhizopus या mucor and penicillium produce spores within the sporangia under favorable conditions. And these are all the examples of the asexual reproduction, where the new generations are created from a single individual. Okay, so
There is a concept test also. You just pause this video and just you solve. Okay, आप ये solve कर सकते हैं. You can solve that one. Okay, so thank you friends for joining this live session, and keep watching my YouTube channel Gopal Online Biology. Thank you.